to subscribe to my YouTube channel, press the bell icon, and get notified when the video drops. What's up, guys? Little delayed. कैसे आप लोग सब? So today is the 5th birthday of my most beautiful, most purest song, मैं रहूं या ना रहूं. How's everyone? I'm late. Yes, I'm late. I was finishing some interviews for you all. Don't worry, अब तक हुआ नहीं है जो फैल रहा है हर जगह. I hope you all know कि COVID's not yet gone. People behaving crazy, doing parties. Hope they know not to. And थोड़े थोड़े shows भी होने लगे हैं. But hopefully people taking precautions and doing them the right way. I have lost my voice because I've been singing in the recent scratches of mine and in the background score of Saina. So I'll be putting up some more surprises on, my posts or IGTV from Saina. It's come really close now. We've started mixing the first song, Main Parinda, which goes as of now by the hashtag Parinda. Manoj Muntashir, me, and Pariniti. I think all three have given their 100%. And obviously Amol sir, Deepa ma'am, and the whole team at T-Series, the producers, Shiv Chanana, Bhushanji, Shivam, Vivin, Raj, Sonal, everyone, all of us. It's a dream project, and hopefully it gets the right release and comes out in the best way possible for you guys. So moving back to Virag sir has written "तू मेरा नहीं बोल दो ना जरा, मैं रहूं या ना रहूं, तेरे मेरे, सलामत, मुस्कुराने की वजह, खामोशियां." So many beautiful songs. आजा, पहले राजा आ रहे हैं before I start. Thank you, Raja. Garam garam adrak. Hashim, missing you, man. Come soon. If you can wait in Goa safely, I'll see you there in a few days. कुछ कहूँ या ना कहूँ, तुम मुझको सदा सुनते रहना. बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना. So this song was made as a tribute. Raja, idhar aao 2 minutes. To this man, my grandfather, Shri Sardar Malik, and I think he blessed me with this melody, made something happen magically where, love you, Ajkal you can't touch surfaces also. And I think I didn't make this melody. Maybe it just came to me as a blessing from him only. It was for him, but it came from him. And, I recently got a picture. One sec. I'll show it to you. Raja, वो दादा की फोटो लेके आओ जो पियानो पे. So this is something my dadi gave me. I'll sing more, don't worry. Which is him from his 20s. That's him, and quite cool, right? Like the hair and the nose, and it's like a little bit of what I had. And this is from the 1950s, 1960s. And now it's a gift of my dadi and me. Music and heartfelt music. And I'm glad that he is in my heart always. Love you.
And there are really cool things. Like, see now, even here it fits. So, like, it's like these things. It's like AM and grandfather together. So, that is that. And these are papers. एक ही पेपर है इस घर में. इस पे कोई कंपटीशन पता नहीं कोई क्विज था खेल रहे थे मैं और अरमान. And this is where it's at now. Both grandfather. इस गाने की एक ये जो स्पेशलिटी है, एक खास बात है, वो ये है कि मैंने पता नहीं बहुत कोशिश की थी इस गाने को एक फिल्म में डालने, क्योंकि फिल्मों का दौर तभी बहुत लोग मुझसे पूछते हैं आपकी वो फिल्म मैं रहूं या ना रहूं का गाना क्या गाना था. सो आई एम ग्लैड दैट एन इंडिपेंडेंट सॉन्ग आई डिड इन 2000 आई थिंक 15 or 16 15 managed to stay around for a good 5 years, but I feel its journey has just begun, which Virag sir wrote. You'll hear this melody always, and this song doesn't force you to listen. It's just going to come and touch you. It's up to you if you hear it and make it yours. And that was the beauty, there was nothing overdone. Imran Hashmi sir was the only one who understood outdated kind of approach, but little did they know that I was going to produce it obviously like 2015 only. But that's how it is. कुछ चीजें होनी होती है हो जाती है. I'm really grateful कि Amit Sharma sir directed this, Isha and Imran sir performed, Virag sir wrote, Arman sang it, दो बहनें दो भाई, Papa, everyone, every relationship in the world. This song is universal to all of that. It connects every person, every life. मैं रहूं या ना रहूं तुम मुझ में कहीं बाकी रहना, बस इतना है तुमसे कहना. इतनी सिंपल सी बात है. Means so much. And मुझे पता है कि not to sound negative or pessimistic, but वो एक चीज होती है कंपोजर की सिग्नेचर, जो मुझे लगता है ऑलमोस्ट 20-30 ईयर्स बाद भी लोग मुझे इस गाने से अगर जानेंगे तो मैं बहुत ही प्राउड फील करूँगा और बहुत आई कैन डू दिस काइंड ऑफ म्यूजिक. एंड मोर इम्पोर्टेंटली इट्स फॉर अ ग्रेटर गुड. मुझे याद है दुबई में I landed at the airport, and I've told this in several interviews that I met a kid who had Down syndrome and he was in a wheelchair, and he got up and he hugged me, and his phone was playing Main Rahu Ya Na Rahu, and he was crying and he was singing Main Rahu Ya Na Rahu, and he hugged me. And that's when I realized that I'm not here as just a music composer or anything. I am the chosen one, maybe by some mystical power above, to reach out to hearts in a different way. Yet still, when he sees that I take it within my stride, obviously sometimes I overreact, I know. But I think there is my grandfather from above, who for me is my God. Like my dad also is God to me. He is, ये दोनों मेरे भगवान है in a way, and they somewhat managed to bless me. Could ever beat Main Rahu Ya Na Rahu as a composition. I don't think I've reached there yet. There is a song which I feel is very special after this, which is part of a movie which will come someday, and next year, not someday. But Main Rahu Ya Na Rahu will be always special because it's a song, ideas on you. It's the most friend zoned song. गाने में लोग फ्रेंड जोन हो रहे हैं, ये गाना भी यानी लोगों को अपने बुरे टाइम की याद दिलाता है, where they loved the girl, they lost the girl, maybe they couldn't say it to the girl, and so many other memories, but it only leaves you with a smile in the end. So, oh damn, I'm a little, पहले गा लेते हैं. मैं देखूं या ना देखूं, तुम मुझको महसूस करना से कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना. Sorry guys, happens every time. When I was 14 years old, the little me was
dealing with my grandfather being very serious. And वो जाते जाते यही बोल रहे थे कि बेटा मेरा एक एल्बम कर दे, म्यूजिक प्रोडक्शन सीख ले, ये वो सब मैंने सीखा ऑलमोस्ट 1 साल बाद. इसलिए ये वो एक अनफुलफिल्ड ड्रीम थी, you know, to do something for him and his soul and his, you know, value as a musician, जो शायद इंडस्ट्री अवार्ड्स, टॉप 20 चार्ट्स, ये सब चीजों से, you know, जो पुराने जमाने में गीत माला ये सब होते थे, उनमें कभी उनके गाने 1-2 से ज्यादा नहीं आ पाए, बट उनका संगीत, उनका काम और उनकी ऑनेस्टी को एक ट्रिब्यूट है. यू नो, गुड बैड सक्सेसफुल सुपर हिट वो तो चलते रहता है लाइफ में, बट दिस मैन मेड ग्रेट म्यूजिक एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम हिज डीएनए. एंड मुझे लगता है कि मैं उनके सोल का डायरेक्ट एक डिसेंडेंट हूँ. और मैं बहुत लकी था कि 14-15 साल की उम्र तक आई कुड स्टे एट होम and learn Hindustani classical informally with some nice jazz progressions from him. आज भी मैं विंडो पे खड़े होता हूँ या कहीं हवा चलती है तो मैं ऐसा हो जाता हूँ and I feel he's hugging me and blessing me, you know. So that's all. It's amazing. It feels really good. और बताइए, what do you feel about Mehro Yanaro? Let me know what were your thoughts, because you all have been hearing it for 5 years. Today also I'm seeing it's trending and all, like it's crazy. It's unbelievable. It's all blessings. And bus, I just want to keep doing such work, man, which remains and remains. That's it. Remains in everyone's heart. अरमान अपने घर पे है, मैं अपने स्टूडियो पे हूँ, रात को घर चले जाऊंगा. So this is my best work till date and I'm proud of it. And now a big thank you also before going for the song which I've just released, which is my debut, something you all waited for 3 years. I'll sing that once for you all and also give you all update soon on Saina. सून यानी तुम्हारा वाला सून, इस बार अपना वाला नहीं. आ रहा है. दूर जाने पे तेरे पास आता था मैं, रूठ जाने पे तेरे सर झुकाता था मैं. बिन तेरे जिंदगी का मैं क्या करूं, किस तरह मान लूं तू मेरा मैं तेरा नहीं. And my most favorite line, Virag sir, Rashmi Virag, thank you for this. मैं वहीं पे था मगर तूने ही देखा नहीं, तेरी खुशी को देख कर मैंने कुछ कहा नहीं. एक रिप्राइज वर्जन भी बनाऊं, नहीं बनाऊं, क्या लगता है बताओ. I'll work on it, but टाइम देना, उसके लिए सुन मत बोलना. हमारी कमी तुमको महसूस होगी, भिगा देंगी जब बारिशें. मैं भर कर के लाया सब रॉन्ग कॉर्ड बजाया, दरारा दरारा रा. बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं. मैं का कॉल क्यों आया अभी, पूरा गाना खराब कर दिया. तेरे बिन जीना यारा, मुझे ना जीना गवारा. हर एक एहसास में तू है, हर दुआ में नाम तुम्हारा. दो दिलों की कहानी है, एक राजा एक रानी है. दुनिया भूले ना सदियों तक ये ऐसी प्रेम कहानी है. ओ खुदा बता दे
क्या लकीरों में लिखा हमने तो बस इश्क है किया. These are the original lyrics of O Khuda. They were Raja Rani pehle. I made it as a song for Salman sir, but he loved it so much, and obviously it was heroic, so it went in hero, and we changed it to तेरे बिन जीना है ऐसे, दिल धड़काना हो जैसे, ये इश्क है क्या दुनिया को हम समझाए कैसे. सेकंड अंतरा भूल गया मैं. प्यार की इन राहों में मिलते हैं कितने दरिया, लाख तूफानों में भी दिल को मिल जाता है जरिया. क्या बात है कुमार सर, क्या लिखे हैं. प्यार की इन राहों में मिलते हैं कितने दरिया, लाख तूफानों में भी दिल को मिल जाता है जरिया. To people who feel like giving up because of hearing तू मेरा नहीं, एक चांस तो बनता है, उसके बाद गिव अप कर दो. सीने से तुम मेरे आके लग जाओ ना, डरते हो क्यों जरा पास तो आओ ना. धुन मेरी धड़कनों की सुनो, नहीं जाना भुला करके ये बातें तुम ही कहते थे. रही खुशियां नहीं मेरी कि तुम भी वक्त जैसे थे. तुम्हारा था रहेगा भी, करे क्या दिल है दीवाना. कभी मैं याद आऊं तो चले आना, चले आना. दिल को मैंने दी कसम न धड़के तेरे बिना, दिल को मैंने दी कसम न धड़के तेरे बिना. धड़के तो सारी जिंदगी, धड़के तो सारी जिंदगी ये तड़पे तेरे बिना. जरा ठहरो, जरा बैठो, करनी है बातें. पास आओ और थोड़ा सर्द है रातें. मेरी नजर का सफर तुझ पे ही आके रुके, कहने को बाकी है क्या, कहना था जो कह चुके. जिस दिन तुझको ना देखूं पागल पागल फिरता हूँ. कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ. This is my theme from the next ballad by Arman and me. मैं हूं ना तेरे साथ. So I just hummed it as a teaser. I've already put the flute section out, but one more jigsaw puzzle ka piece. Da ra 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 da ra ra
विविन जो यहाँ पे है देख रहे हैं, प्लीज देखना कि इस वीडियो पे कॉपीराइट इशू ना आ जाए तो भी ठीक है। फील में गा दिया मैंने। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हियर आर यूजुअली रिकॉर्डिंग व्हाट आई एम डूइंग। That's it for today. Thank you for all the love that you've shown. Tu Mera Nahi. Keep sharing it, spreading it, show it to more people, and let me know what they say. Hope they like the acting. I know you guys have loved the singing and the music. And आप लोग मेरे fans हैं तो आप acting को भी अच्छे numbers दे रहे हैं. But thank you for today. And it was a beautiful session. And coming up soon is the Saina Nehwal biopic. The entire soundtrack, the score, and obviously मैं हूं ना तेरे साथ। See you. बोलना पड़ता है। अगर आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन and get notified when the video goes live.